Hello. Sir, good afternoon, sir. So, sir, we can start. मैं पीछे जितने भी लोग खड़े हैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ कि बैठ जाएं प्लीज। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। We pay homage to our Lord Ganesha, who has a curved trunk and shines as bright as a million suns. May he bless all our endeavors and aids such in overcoming any obstacle. Not everyone can achieve greatness, but every person can make a big impact with small act of kindness. I am pleased to extend a warm welcome to everyone gathered here today. On behalf of Manovikas Family, I wish you all a happy and prosperous new year. I would also like to extend my heartfelt welcome to everyone of you for the 9th Convocation cum Award Ceremony 2024 and the Vaidya Pandit Kailash Mishra Devanru Memorial Lecture on the theme निमित्त मात्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय परंपरा के अनुसार किसी भी शुभ काम की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन से करते हैं, तो आइए आज भी सबसे पहले हम शुभ काम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करने से करें। तो मैं आग्रह करती हूँ कि प्लीज हमारे गेस्ट सर मैम सुटी मैम देसाई सर प्लीज आए। आग्रह करती हूँ कि प्लीज हमारे गेस्ट सर मैम सुटी मैम देसाई सर प्लीज Thank you so much. Now I would like to invite Dr. Nilesh Desai sir, President of Manovikas Charitable Society, to formally welcome our guest present here. Sir, please. Thank you. Namaskar, Vanakkam.
अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और जो भी भाषा है, जो भी धर्म है, जो भी मनोविकास फैमिली की तरफ से आप सबका स्वागत करने में मुझे बहुत खुशी, और हम लोग सभी, मुझे विश्वास है, आज सुनने को बहुत उत्सुक है, क्योंकि जो विषय चुना गया है वो बहुत ही गहरा और गंभीर है, लेकिन आई एम श्योर वील एंजॉय लिसनिंग टू दैट। सो आवर पेट्रन मैडम श्रुति कक्कड़ जी, रामानुजन जी, मनीकास के साथी और आपका बहुत बहुत स्वागत है, औपचारिक रूप से और दिल से धन्यवाद। Good afternoon, sir. For honoring the occasion with your inspired words, please accept our heartfelt appreciation. Your presence holds a great significance for us. Today we welcome a distinguished individual who has chosen to celebrate his birthday by paying tribute to his beloved father. It is an honor for us to participate in this meaningful occasion. We are grateful to Dr. Arnold Kumar Bhuvansar, the visionary behind this wonderful evening, for celebrating an inspiring event and reminding us for the importance and power of love. Thank you, sir. Sir, please welcome you. और किसी के चलाते लोगों सर भी बैठ जाएंगे वो बस म्यूट कर दो बेटा कह रहा था रिचार्ज नहीं है फोन में जूम में म्यूट कर दो डेफिनेटली आपको बहुत सागर बनाना है। और मैम पूछ रही थी कि ये जो टॉपिक है ये इतना बड़ा है, ये इतना विस्तार है, बृहद है, मैं कठिन नहीं कहूँगा, बृहद है, तो ये किसने चूज किया? तो उस टॉपिक को चूज करने के लिए मैं अरविंद सारदा सर का भी बहुत स्वागत करता हूँ और बहुत ही आपको नमन करता हूँ कि आप इतने अच्छे विचार आज हम सबके बीच में लाए। और मैं स्वागत करूंगा मैडम स्तुति कक्कड़ का, कि हमारी पैट्रन है, और पैट्रन से ज्यादा जो है आत्मीयता है कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ, मनोविकास परिवार के साथ हमेशा वो हम लोगों के लिए अच्छा सोचती है, हम लोगों के लिए भला सोचती है, विकास के बारे में सोचती है। तो मैम आपका ऐसे ही हम लोगों के बीच आशीर्वाद बना रहे, मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप हम लोगों को हमेशा आशीर्वाद देते हैं। और हमारे बीच KVS राव सर हैं, राव सर मिनिस्ट्री के जो भी अपना डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी उसके फॉर्मर डायरेक्टर हैं। सर आपका स्वागत है। हमारे संदीप सर हैं, आपका स्वागत है। और अगर हम लोग देखें कि मनोविकास परिवार में हमेशा गुप्ता सर का एक मेंटर की तरह पूरी तरह से हमेशा एक आशीर्वाद होता है, तो मैं आपका भी स्वागत करता हूं सर। हमारे बोर्ड मेंबर हैं यहाँ पर, और सबसे अच्छी बात है कि एक ऐसे बोर्ड मेंबर है जो फाउंडर वाइस प्रेसिडेंट है, निर्मल भंडारी मैम, आपको बहुत बहुत प्रणाम कि आप अभी तक मनोविकास परिवार से जुड़े हुए हैं और अभी तक आप आते हैं। और खास करके मैं आज इस पूरे मनोविकास परिवार की ओर से मैं सर का, निलेश देसाई सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत प्रणाम सर कि आप हमेशा एक आशीर्वचन देते रहते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। आप सभी का, जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज अनिल सर आप आ जाइए। अनिल सर का भी स्वागत है। तो मैं मनोविकास परिवार की ओर से जितने भी यहाँ पर आत्मीय जन हैं, आप सभी को नववर्ष 2024 की शुभकामनाएं देता हूँ।
आज के इस 9वें दीक्षांत पुरस्कार समारोह में आप सभी गणमान्य अतिथियों का हम हृदय से अभिनंदन और नमन करते हैं। आज का दिन इसलिए भी श्रेष्ठ है कि हम लोग वैद्य पंडित कैलाश मिश्र दीनबंधु के 7वें स्मृति व्याख्यान में भाग ले रहे हैं। उनके मेमोरियल लेक्चर में भी आर पार्टिसिपेटिंग। कैन वी हैव स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड। ओके। वैद्य पंडित कैलाश मिश्र दीनबंधु जी अपने जीवन काल में हमेशा ईश्वर की आराधना को प्राथमिकता देते थे और वे हमेशा लोक कल्याण और दरिद्र नारायण की सेवा भक्ति में लीन रहते थे। उन्होंने अपने जीवन काल का 45 वर्ष से भी ज्यादा एक दृढ़ निष्ठा के साथ शांत होकर, कभी भी उनको कौतूहल नहीं देखा, कभी भी हलचल नहीं देखा, गरीब और निर्धन दलित परिवार की सेवा में उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपने जीवन को लगाया। मैं पापा जी के द्वारा 8 जनवरी 2004 में लिखी गई एक प्रमाण पत्र का जिक्र करूंगा, जो आज उनके स्मृति में प्रस्तुत व्याख्यान जो आज हमारे शारदा सर ने रखा है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन विषय के साथ यह युक्ति संगत भी है और यह प्रमाण पत्र मैं लेकर भी आया हूँ कि सही में वो हमारे पास भी है। और इस प्रमाण पत्र में पापा जी का संदेश यही था कि पुत्र उठो और जीवन को पवित्रता के साथ जियो। इस संदेश को जब मैं जीना शुरू किया तो मुझे अपने कार्यों की प्रखरता का समावेश अनुभव हुआ कि हमारे काम कितने अच्छे से, कितने आगे और कितने लोगों पर पहुंच रहा है, इसका अनुभव बड़े ही अच्छे से हुआ। और इस प्रमाण पत्र का संदेश है कि जीवन को सूर्य और चंद्र की तरह बिना संकोच के साथ जीना। जैसे चंद्रमा और सूर्य अपने सही समय पर आते हैं, सही समय पे जाते हैं, हमें रोशनी करके जाते हैं, उनको कोई संकोच नहीं होता। ऐसे ही हमारा काम होना चाहिए। साथ ही अपने चिंतन और विवेक को स्वतंत्र रखकर जीवन का आनंद लेना। इस प्रमाण पत्र में बड़े अच्छे से ये कहा हुआ है कि आप हमेशा आपका जो सोच है, जो आपका अनुभव है, वो बड़े अच्छे से होना चाहिए। और मैं इस प्रमाण पत्र को जब भी पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि जो ईश्वर का दर्शन है वो बड़े आसानी से हो जाता है। और खास करके अगर हम देखें कि जो भी जन्मदाता माता पिता है, उससे बड़ा कोई ईश्वर है नहीं। और अगर हम ईश्वर का दर्शन मंदिर मस्जिद कहीं भी करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने माता पिता का दर्शन करना चाहिए। और मुझे याद है कि 2004 में पापा जी ने 16 दिन का मौन व्रत और एकांतवास का साधना किया था और उस साधना के तुरंत बाद ही यह प्रमाण पत्र को उन्होंने लिखा। मुझे यही अनुभव होता है कि उन्हें उस साधना से कोई दिव्य ज्योति प्राप्त हुई, जिसका जिक्र इस प्रमाण पत्र में भी है। यह प्रमाण पत्र अपने आप में मुझे मेरे स्वयं का सार्वभौमिक दर्शन करा देता है। अगर मैं चाहूं कि आलोक क्या है, जब मैं ये पढ़ लेता हूं तो लगता है कि ये आलोक जो है कि इस पूरे प्रमाण पत्र में उतरा हुआ है। और पापा जी का यह संदेश कि आपके सत्य प्रयत्नों से किए गए काम से ही शांति मिलती है। सच में यही बात है कि जब तक मैं सच्चाई और सही रास्ते पे, ऐसा नहीं कि मैं इंसान हूँ कि सच्चाई से भटकता नहीं हूँ, कभी कभी भटकता भी हूँ, लेकिन जब मैं सच्चे रास्ते पे आता हूँ तो सच में उस काम से बहुत ही शांति मिलती है। और जो उनका संदेश है यह बड़े ही अच्छे से हमें मेरे एक जो पिछले साल हम लोगों ने कन्वोकेशन किया था, अहम ब्रह्मास्मि, और उस पूरे उसका दर्शन जो है इस वाक्य से हो जाता है, इस प्रमाण पत्र से हो जाता है। और जब जब मैंने अपने विचारों से या अपनी अंतरात्मा से कोई भी प्रयत्न मनोविकास परिवार के लिए किया है तो वो मेरे जीवन की संक्रांति काल के जैसा है। संक्रांति काल मतलब एक, हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं कि एक अच्छा सा टर्निंग पॉइंट नए लाइफ के जीवन की तरह है और एक हमेशा नई दिशा प्रशस्त किया है। मैंने अभी तक जो भी सीखा है या ज्ञान अर्जन किया है उसमें ज्यादातर भाग विशेष दिव्यांग जनों से सीखा है। प्लीज वेलकम सर। तो जो भी मेरी जो लर्निंग है लाइफ की, वह पूरी तरह से दिव्यांग जनों के द्वारा दिव्यांग जनों से सीखा है। और कोई भी पुस्तक का अगर अध्ययन करना पड़ा, बहुत लोग मेरे ऑफिस में आते हैं, वो देखते हैं कि बहुत सारे पुस्तक हैं, तो मैं सच बताऊं उस पुस्तक का अध्ययन मैं इसलिए करता हूं कि कभी कभी मुझे कोई प्रश्न मेरे मन में आता है तो मैं उसका उत्तर ढूंढता हूँ। मैं पूरी किताब नहीं पढ़ सकता, मेरे लिए ये थोड़ी डिसेबिलिटी है, लेकिन
अगर प्रश्न का उत्तर ढूंढना हो तो मैं उसमें जरूर ढूंढ पाता हूँ। और इसलिए ढूंढता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि मेरी आत्मा का जो सृजन है वो अच्छे से हो पाए, मेरे आचरण में, मेरे व्यवहार में कोई बदलाव ला पाऊं। और जीवन में बहुत बार मैंने सिर्फ उस पुस्तक को इसलिए पढ़ा है कि कभी कभी मन में अहंकार आ जाता है, कभी कभी ईगो आ जाता है कि ऐसा क्यों, अच्छा चलो मैंने ही नहीं, तो मुझे उसको खत्म करने के लिए वो पुस्तक का साथ लेना पड़ता है या फिर करना पड़ता है। और पापा जी का भी यही आदेश था कि मानवीय गुणों का विकास करना और निस्वार्थ प्रेम में से हम सार्थक काम करना। और पापा जी का एक मंत्र बहुत ही अच्छा था, और यह मंत्र मुझे बहुत दिनों के बाद समझ में आया कि विनाश से विकास की ओर जाने के लिए साधना करो। मैं हमेशा विनाश को कुछ और चीज लेकर सोचता था। वैसे जब यह प्रमाण पत्र पापा जी ने लिखा, तब तक मुझे मनोविकास का गठन करके इसे चलाते हुए करीब 7 साल हो गए थे, 7 years। और मैं बहुत ही असमंजस में रहता था कि दिव्यांगता के क्षेत्र में विकास की गति बहुत कम है। जब भी मुझे याद है कि हमारा पहला स्टूडेंट था आशु, उसको जब हम लोग सिखाते थे तो सीखने में कई सालों तक सिखाया, लेकिन वो कुछ भी नहीं सीख पाया। सच्चाई तो ये है कि वो खाना खाने के लिए भी नहीं सीख पाया। बहुत ही हाई सपोर्ट नीड था उसकी जरूरत को। हमेशा लगता था कि पता नहीं हम लोगों का जो काम है, इतना मेहनत है, उसका कुछ भी कोई अंतर नहीं आता। और फिर एक समय ऐसा था कि पेरेंट्स भी उस काम की कोई सराहना भी नहीं करते थे। मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे जो एजुकेटर्स हैं वो सेक्टर में भी आएंगे और वह काम करेंगे, कोई सराहना नहीं करते। मुझे लगता था ये काम थैंकलेस है, बेकार का मैं इस सेक्टर में आ गया। और जब मैं इस मंत्र के बारे में बात किया कि विनाश से विकास की ओर जाना, और पापा ने जब यह मंत्र इस सर्टिफिकेट में भी लिखा, तो मुझे लगा कि सफलता का यह टिप्स जो है प्रमाण पत्र में लिखा हुआ है और बहुत ही शक्तिशाली है। और इस मंत्र के जाप या साधना करने का प्रयास थोड़ा कठिन था। जो मैं जिस तरह से उसको सोच रहा था कि विनाश से विकास की ओर क्या करना है, वो थोड़ा गूढ़ था। और उन दिनों मैं जब अपने काम के उतार चढ़ाव से ऊब जाता था तो प्रमाण पत्र के इस वाक्य को जरूर पढ़ता था। और एक दिन मुझे समझ में आया कि दिव्यांगता का क्षेत्र ही कुछ ऐसा है जहाँ अल्पता, दीनता, न्यूनता, तुच्छता, ये शब्द भरे पड़े हुए हैं। हमें उस बच्चे से ज्यादा हमें इन शब्द के साथ संघर्ष करना होगा। हमें पूरे सोसाइटी के साथ संघर्ष करना होगा कि इस सोच को हम कैसे बदलें और कैसे हम इससे ऊपर उठकर जीवन की श्रेष्ठता तक पहुंचने का रास्ता तय करें। और सच मानिए तो जब मैंने इस वाक्य को समझा कि इन सारे नेगेटिविटी से कैसे दूर होना, उसके बाद से मेरे जीवन में बहुत सारी बदलाव महसूस हुआ। मैं जीवन की जो श्रेष्ठता है, उत्कृष्टता है, विशिष्टता है, वो सब चीज पाना सरल हो गया। और उस दिन से मनोविकास के बदलाव में भी बहुत सारा चीज हमें दिखा। पापा जी सब कुछ चुनकर लाते थे हमेशा। वो उनका काम था कि अगर वो खाने पीने के लिए भी जो लाना है तो बहुत अच्छे से 5 चीजों का वो उसमें से जो अच्छी चीज हो वह लाए। मुझे इतना भी याद है कि अगर कोई पढ़ाने के लिए टीचर को लाना होता था, उसके लिए भी चुनते थे कि अच्छा वो टीचर या ये टीचर या ये टीचर। और घर में हर एक व्यक्ति का पसंद नापसंद वो उनको पता था, और सबके लिए वो उत्कृष्ट चीज चुनकर लाते थे। और पापा जी का जो इस प्रमाण पत्र में एक संदेश का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा, और यह कोट मैं करूंगा कि तुम्हें जीवन का श्रेष्ठ उपलब्धि पाने हेतु अपने कदम को मेरे द्वारा चुने साथी के साथ हिमालय की बर्फीली शिखर की ओर बढ़कर अपने उद्देश्य की मंजिल तक पहुंचना है। तो मैं यह वचन तुमसे चाहता हूँ, एक पापा ने कहा, मैं अनकोट करता हूँ। तो पापा जी का जो पसंद था वो इंदिरा पापा जी की पसंद थी। और सच में अगर मैं कहूँ कि इंदिरा का मेरे जीवन में आना एक उत्कृष्टता का एक सफल उदाहरण है। लेकिन इस वाक्य में एक और चीज लिखा हुआ था कि हिमालय की बर्फीली शिखर की ओर बढ़ना। ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ये शायद मैं बहुत वर्षों के बाद यह सब समझ में आया। कई साल तक तो मैं समझता रहा कि हिमालय की बर्फीली शिखर तक जाना है। और जेपी सिंह सर हैं, वो हिमालय की ओर हमेशा यात्रा करते रहते हैं हर साल, तो मैं इनसे भी बार बार टिप्स लेता था। और मुझे लगता था कि मैं इंदिरा को बोलूंगा कि हिमालय चलना है, बर्फीली शिखर पे चलना है। इंदिरा को ठंड से डर लगता था तो वो मना कर देगी।
या फिर कभी कभी बीच में लो बैक पेन होने लगा तो मैं ये सोचने लगा कि अब चलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कहीं बीमार ना पड़ जाऊं। लेकिन ये कहीं वचन अधूरा ना रह जाए, ये मेरे मन में हमेशा खटकता था। मैं धन्यवाद दूंगा कि करीब 3 साल पहले प्रतिदिन मनोविकास में एक सचेतन का सत्र शुरू हुआ, जिसमें कि हम लोग प्रेयर करते हैं, ध्यान करते हैं, विचार का आदान प्रदान करते हैं। मुझे लगा कि उस सत्र के लिए मैं शिव पुराण को पढ़ूं और समझूं। फिर क्या था कि मुझे हिमालय की बर्फीली शिखर पे जाने का अर्थ भी समझ में आ गया। और हिमालय को शिवालिक कहते हैं, यानी कि अध्यात्म का एक चेतना का रूप, एक चेतना का केंद्र। जैसे जैसे हमारे शरीर का हृदय हमारी चेतना की अनुभूति को समझ पाता है, तो हिमालय को श्रद्धा की दृष्टि से देखें तो यहाँ एक से एक रहस्य छिपा हुआ है, और जो हम सभी को अचंभित कर सकता है। तो वैसे ही जब मैं अपने आध्यात्मिक चेतना के उस शिव पुराण को पढ़ के उस सचेतन के दौरान मैंने आध्यात्मिक चेतना की ओर अपना कदम बढ़ाया, तो मुझे बहुत ही सकारात्मकता का अनुभूति हुआ। सच में हिमालय का शिखर जैसा सुंदर है, वैसी ही अनुभूति मुझे सचेतन में कुछ ज्ञान प्राप्त करके हुआ, और हमेशा लगा कि वह एक स्वर्गिक अनुभूति है, एक अच्छी अनुभूति है। और वह अनुभूति ऐसी ही थी जैसे कि अगर हिमालय के बर्फ पे अगर सूर्य की किरण पड़े तो कितनी अच्छी चमक होती है, वैसी ही चमक, वैसी अनुभूति हमें सचेतन से मिला। और इसका धन्यवाद मैं गुप्ता सर को भी कहूंगा कि वो हमेशा सचेतन में आते हैं और बहुत अच्छा बात कह के जाते हैं। पापा जी ने प्रमाण पत्र में लिखा कि पिता पुत्र की गलती नहीं देखते, उसे सदैव प्यार ही प्यार देकर जीवन में उदारता, सहानुभूति, मधुरता, परमार्थ का पाठ पढ़ाते हैं। यह वाक्य लिखकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि मैंने जीवन में जो भी गलती किया, हमारे पिताजी उस गलती से वाकिफ थे, और फिर वाकिफ होने के बावजूद भी उन्होंने कभी टोका नहीं, कभी कुछ कहा नहीं। और मैं यह कहूंगा कि यह पाठ खास करके मैं अपने परिवार में जितने बच्चे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपके माता पिता आपके हर क्रियाकलाप से वाकिफ होते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं। पापा जी किसी गलती पर डांटते नहीं थे, बल्कि यह कह देते थे कि जाने दो, आगे बढ़ो और इस गलती को दोहराना मत। मेरे जीवन का पाठ है, यह एक माध्यम है। मैं कहूँ कि मैं हर एक भूल के बाद जरूर उसको सुधार करता हूँ, और सुधार करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। इस प्रमाण पत्र का एक वाक्य बड़े ही अच्छे से मुझे जो है कि मैंने उसको आत्मसात किया हुआ है, बड़े अच्छे से मैंने उसको समझ लिया हुआ है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव। और इस बात का जिक्र मैंने 18 दिसंबर को भी किया था कि ये पता नहीं, ये जो चीज है, ये 3 शब्द जो है, 3 वो मेरे लिए बहुत ही अगर जीवन का कहूँ तो एक अनमोल विचार है। और मैं हमेशा जो भी हमारे कभी भी हमने अपने जीवन में गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति और हर किसी के प्रति कुविचार लाने के लिए कभी भी प्रेरित नहीं होता, ना ही सोचता हूँ। बाकी सब ठीक है। और मैं इसको ये जो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ये हमेशा हमें जीवन में मदद करता है। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं निमित्र मात्रं भव सभ्य साचिन, जैसे महान विचार संयमशीलता की ओर कदम बढ़ाकर आगे का मार्ग प्रशस्त करता है। जीवन में हर पल यह भाव बना रहना चाहिए, मातृदेवो पितृदेवो भव का। और पापा जी ने कभी भी भौतिक धन संपत्ति के अर्जन को उसको अर्जना, उसको कभी भी महत्व नहीं दिया। मुझे यह निश्चित लगता है कि उनका लक्ष्य भौतिक संपदा से ज्यादा प्रेम को अर्जन करने में था। पापा जी ने इस प्रमाण पत्र में यही लिखा कि मेरे पास प्रेम से बढ़कर उत्कृष्ट वस्तु दूसरा नहीं है जो तुम्हें देता। और शायद हम सभी को भी प्रेम से बढ़कर कोई भी उत्कृष्ट वस्तु है नहीं, और हम अगर यही बांटे तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। इस प्रमाण पत्र में एक और जिक्र था कि मैं तीसरे पड़ाव का, इस प्रमाण पत्र में लिखा हुआ है लास्ट में, तीसरा पड़ाव का प्रारंभ। इससे मुझे यही समझ में आता है कि हमारे जीवन के 4 प्रमुख पड़ाव हैं, जिसको हम आश्रम कहते हैं, जो मुझे समझ में आया। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें कि हमें शैक्षणिक उपलब्धियां, बौद्धिक विकास करना चाहिए। दूसरा कि गृहस्थ आश्रम, जिसमें सामाजिक विकास हेतु धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति होती है।
और तीसरे पड़ाव का जो संदर्भ है वो वानप्रस्थ आश्रम से है, जिसमें कि आध्यात्मिक उत्कर्ष हेतु क्रियाशील होना होता है। और शायद यह मेरे जीवन में प्रारंभ हो चुका है, और मैं चौथा जो है वो संन्यास आश्रम है, जहाँ मोक्ष प्राप्त हेतु क्रियाशील होना होता है। उसके लिए मैं गुरु के शरण में कभी गुरु से बातचीत करूंगा कि क्या हो सकता है। तो मनोविकास परिवार के लिए मेरा जो अनुभव है वो आनंदमय रहा है, चाहे हमारे पास सेवा के लिए साधन हो या नहीं हो। बस मैं तो सबके लिए खुशियां बटोरने का साधन ढूंढता रहता हूँ कि किसमें खुशी मिले। और मैं देखता हूँ कि मनोविकास परिवार में जितने भी हमारे बोर्ड मेंबर हैं, जितने भी हमारे स्टाफ मेंबर हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, सभी खुशी खोरी तो करते हैं। सभी खुश रहने के लिए हमेशा कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं और हमेशा वो खुशियां बटोरते हैं। तो मनोविकास परिवार के लिए मैं हमेशा निमित्त मात्र होकर कर्म कर रहा हूँ, और आज तक किसी फल के लिए कोई चिंता मुझे हुई नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि इतने बड़े बड़े पैटर्न हैं, इतने बड़े बड़े मेंबर्स हैं, सबका जो सहयोग है, सबका जो आशीर्वाद है वह प्राप्त होता रह रहा है। तो मैं इसी शब्द के साथ यहाँ विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। मैंने पापा जी की बिल्कुल भी चीज को नहीं बोला था। Thank you, sir. We appreciate the time and effort you dedicated to sharing your thoughts. Your words took us a journey back in time. Now, let us continue this splendid afternoon by inviting Mrs. Indira Alok to commence the convocation ceremony. I want to extend my heartfelt congratulations to our students for your remarkable achievement this academic year. Their hard work, perseverance, and determinations have finally paid off. And today you have found a platform to be recognized for your outstanding performance. Always remember that with the hard work and dedications, anything is possible. Your achievements are a testament to that. Keep pursuing forward and let this be beginning our journey towards success. So, मैं चाहती हूँ कि इस अवार्ड के लिए मैं हमारे गेस्ट को बुलाना चाहती हूँ फेलिसिटेशंस के लिए। सुती मैम, देसाई सर, मुरलीधरन सर, प्लीज आइए। जेपी सिंह सर, गुप्ता सर, राव सर, प्लीज। आप लोग के पास बहुत है, हम लोग लेने कुछ आप मैम, मेरा मैम एमएसआई का मिलेगा, उसके बाद एमएसआई नहीं, पहले बीएड किस साइड का है ऐसे में। These are founded by our founder members.
मैंने अभी देखा नहीं यहाँ तो पहन यहाँ पहनना मैं आपको ले आओ ले आओ ले आओ लो जोरदार तालियां अरे हो गया तो अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस दीक्षांत समारोह का आरंभ करते हैं। दीक्षांत समारोह हमेशा से ही एक ऐसा विशेष अवसर होता है जिसमें हम शुरू के वर्षों में की गई कड़ी मेहनत को लक्ष्यों की प्राप्ति व सफलता की प्राप्ति से जुड़ते हुए देखते हैं। यह एक ऐसा यात्रा होता है जहां शायद अस्थायी कदमों के साथ शुरू होती है और हमें ऊंचाइयों तक ले जाती है। इस यात्रा में हम कई असाधारण क्षणों का अनुभव करते हैं और उन यादों को बनाते हैं जो आगे के वर्षों में याद की जाती है। मैं सभी छात्रों से कहना चाहती हूँ कि जीवन में कुछ पाने के लिए हमेशा मन में सीखने की इच्छा बरकरार रखनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं होता है। आप अच्छे मनुष्य बने, अच्छा मनुष्य समाज के हर क्षेत्र में अच्छा ही होता है। सभी छात्र व छात्राएं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब अलग अलग संस्थानों से जुड़ते हैं, तब आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि उस संस्थान की प्रगति ही आपकी प्रगति होगी। आपकी प्रगति उस संस्थान की प्रगति में छुपी हुई है। इसलिए जिस भी संगठन से जुड़कर आप काम करते हैं, उस संगठन को अपना संगठन मानकर चलें। तो सबसे पहले मैं इस दीक्षांत समारोह का आरंभ अपने डीएड की छात्र छात्राओं के साथ करना चाहूंगी। तो सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूंगी सानिना प्रवीण। सानिना आप आए, जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। हार्ड वर्किंग प्रवीण और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि साइन मैम से कि साइना को उसका प्रमाण पत्र देके सम्मानित किया जाए। नेक्स्ट वैभव कौशिक, वेल मैनेज द एक्टिविटी एंड गुड इन एकेडमिक। तालियां बच्चों को प्रोत्साहित करती है, तो तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वैभव कौशिक 77.21% well manage the activity and good in academic. Madhu 81.67%, very sincere and 100% attendance. So congratulations, Madhu. Next, Neha Joshi, Neha Rao 72.71%, good participation in all activities. तालियां बजती रहनी चाहिए और बाकी जो भी इनके सहभागी है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के लिए तालियां बजाते रहें। जितनी तालियां बजेगी उतने पकौड़े मिलेंगे। Next, Anchal Panwar 84.04% scored second position, good in study and cultural program too. Congratulations, Anchal. बहुत ही होनहार लड़की है हमारी। Next, Neha 69.04%. Despite many challenges of behavior, she passed with good score. Thank you, Neha. आपके इस सपोर्ट के लिए जो आपने अपने आप को ही दिया है।
Next, Akanksha, 79.54%. Very hard work and took initiative for anyone. Thank you Akanksha, बहुत ही अच्छी हमारी योगा पार्टनर है, योगा है और बहुत ही अच्छा योगा करती है, तो थैंक यू आपके इस एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए। नेक्स्ट, नेहा गुप्ता, 71.63%, good in art and craft and help to student as well. जोरदार ताली बजती रहनी चाहिए नेहा गुप्ता के लिए भी। निशा फातिमा, 80.13%, timely submission of all work. आप अपने ही दोस्तों के लिए ताली नहीं बजाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। नेक्स्ट, आकाश पाल, 80%, very politely handle the students in school और बहुत ही स्मार्ट बॉय है हमारा। मोहम्मद हासिफ, नेक्स्ट, 71.42%, मस्ती एंड enjoyable स्टूडेंट ऑफ कॉलेज, बहुत ही मस्तीखोर हमारा ये बच्चा है। इतनी शांति अच्छी नहीं लगती है। Next, Asa, 82.25%, scored in third position, very calm and initiative and creative ideas. जितनी छोटी है उतनी ही बड़ी पटाता है। Next, Draksha, 79.67%, sincere in study, सभी काम समय पे पूरा होना चाहिए, ये इनका हमेशा लक्ष्य होता है, तो अपने दोस्तों के लिए बराबर ताली बजती रहनी चाहिए। नेक्स्ट, Reza, 86.96%, score fast and very dedicated to one student with PWD, also good in ICT. Next, Renu Gupta, 73.58%, helping in nature. तालियां बजती रहनी चाहिए। Next, Riya Khan, 71.54%, always helping nature. Anshita, 79.67%, good in study and cultural activities too, always ready to help everyone. तालियां बजती रहनी चाहिए, सभी बच्चों से, सभी सहपाठियों से अनुरोध है कि तालियां बजती रहनी चाहिए, जितना ताली बजाएंगे हाथ गर्म रहेगा, ठंड नहीं लगेगी। Next, 77.04%. Next, Ansu Sharma, 81.29%, completed her study with all pressure of home as well and good score. So thank you Roda Ansu के लिए, बहुत ही प्रेशर के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरी की। Next, Abdullah, 79%, hard work due to exam, joined PPF and joined Sharp PPF. So thank you Abdullah. Next, Saira Chaudhary, 72.92%, and हमारी cultural participant की द्रौपदी। Next, Sahansa Adil. So मैं सहनसा के भी आपने ओके कोई बात नहीं, तो सहनसा के भी आपने आप उनकी सिस्टर आप उसका मार्कशीट ले लें। तो थैंक यू एवरीवन। अब इस कार्यक्रम को आगे रखते हुए मैं अपने जो हमारे विशेष बच्चे हैं और जिनकी कड़ी मेहनत पूरे साल
उनके माता पिता के साथ, उनके शिक्षकों के साथ दिखते हैं और आज वो इस मकाम पे पहुंचे हैं। तो मैं अपने बच्चों से, अपने शिक्षकों से अनुरोध करूंगी कि जो हमारे बच्चे हैं उनको बुलाया जाए। सबसे पहले हिमांशी, ये हमारा एजुकेशन जो हमारे विशेष बच्चे हैं, हम लोग मनोविकास में NIOS की तरफ से लेवल ABC मीन्स क्लास 3rd 5th 8th एंड सेकेंडरी एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगी सबसे पहले हिमांशी, जिन्होंने पिछले साल लेवल A को कंप्लीट किया है विद 85%। तो हिमांशी आप आ जाए, जोरदार ताली हमारी इस बच्ची के लिए। बहुत ही होनहार बच्ची है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, लेकिन सब कुछ में बहुत ही आगे। तो थैंक यू हिमांशी, और सभी से रिक्वेस्ट है कि हिमांशी के लिए जोरदार ताली चाहिए। हाँ, आगे पीछे। नेक्स्ट साहिल सुनेजा, साहिल सुनेजा। आगे पीछे दिखने नहीं। साहिल ने भी पिछले साल लेवल A कंप्लीट किया है, 70% स्कोर प्राप्त किया है। एक लिस्ट चाहिए। तो जोरदार ताली साहिल के लिए भी। नेक्स्ट पार्थ रोहिल्ला, पार्थ रोहिल्ला ने पिछले साल लेवल B कंप्लीट किया है विद 73%। लेवल B में इक्विवेलेंट क्लास 5th। पार्थ रोहिल्ला, तो जोरदार ताली भी पार्थ के लिए। पार्थ के पेरेंट्स भी है, टीचर्स भी है, तो जोरदार तालियां हो जानी चाहिए पार्थ के लिए। नेक्स्ट काका, काका ने पिछले साल लेवल C क्लास 8 को पास किया है विद 90% स्कोर। तो थैंक यू काका, काका बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन भी है और अभी ये इंटरनेशनल के लिए सेलेक्ट हुआ है। तो वी आर वेटिंग कि जल्दी काका इंटरनेशनल में भी अपना रंग जमाएगा। नेक्स्ट हिमांश कौशिक, हिमांश ने भी पिछले साल लेवल C कंप्लीट किया है विद 85% और इस साल हिमांश क्लास 10th में इनरोल हुआ। तो हिमांश जल्दी आइए। वेरी गुड हिमांश, कम ऑन। नाउ हिमांश इन 10th क्लास। नेक्स्ट मैं अपने सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ बढ़ती हूँ, जहाँ पे इस साल कुल हमारे 8 बच्चों ने सेकेंडरी एजुकेशन को पास किया है, जिसमें सबसे पहले मैं सौम्या मेहरा को बुलाना चाहूंगी। सौम्या मेहरा की मम्मी की डेडिकेशन, पापा का डेडिकेशन दिखता है और सौम्या बहुत ही छोटे से हमारे साथ जुड़ी है और पिछले साल इन्होंने 74.6% के साथ अपनी सेकेंडरी एजुकेशन को कंप्लीट किया है। तो जोरदार ताली सौम्या मेहरा के लिए। नेक्स्ट श्रीहन दलाल, श्रीहन की डेडिकेशन और सरस्वती मैम जो उनकी मम्मी है उनकी डेडिकेशन हमें दिखता है, हमने बहुत ही करीब से उनके डेडिकेशन को देखा है। श्रीहन ने पिछले साल 73.5% के साथ अपनी सेकेंडरी एजुकेशन को प्राप्त किया है। तो श्रीहन आपके लिए जोरदार ताली बच्चे और आप अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करें। श्रीहन सामने देखिए। जोरदार ताली श्रीहन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास सैजल है। सैजल, सैजल ने पिछले साल बहुत सारी परेशानियों को झेला है, बहुत सारी परेशानियों को अपने करीब से देखा है। इस परेशानी के बावजूद भी सैजल ने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन को 54.6% एजुकेशन के साथ प्राप्त किया। तो थैंक यू सैजल। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी नहीं आए हैं, जैसे प्रथम यादव, रुचि सिंह, आदित्य गंजू, वेदांश, ये सभी बच्चों ने पिछले साल 10th क्लास को पास किया है विद अच्छे स्कोर मोर देन 75%। तो सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, उनके पेरेंट्स के लिए। So thank you everyone and over to Samvita ma'am. Once I just want to say
Manovikas is also run a we are an IGNOR Special Study Center for last 13-14 years. And we have a master MSW, Master in Social Work. So one of students is joined here, he is from Hyderabad. तो स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए वो आए हैं, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अब्दुल सर फॉर कन्वोकेशन प्लीज. Master in Social Work Counseling. नहीं जाएंगे नहीं, आप अपने स्वास्थ्य स्थान पर. तो थैंक यू हमारे गेस्ट आज हमारे बच्चों को इस बहुत ही सुनहरे अवसर पर सर्टिफिकेट्स देने के लिए. एंड थैंक यू इंदिरा मैम एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल आवर स्टूडेंट्स ऑन हिज इनक्रेडिबल माइलस्टोन. Now I'm privileged to extend the heartfelt welcome to our esteemed guest and speaker, Shri R. Muralidharan sir. He is a senior disciple of the globally renowned philosopher Swami Parthasarathi, considered one of the great exponents of the Vedanta philosophy. Mr. Muralidharan sir's extensive study and research on Vedanta, under the direct guidance of his spiritual guru Swami Parthasarathi, has made him a true inspiration to us all. We also welcome Mr. Arvind Sade, a divine personality with a unique charm and aura. He is a spiritual and motivational speaker who has addressed national and international audience and has been a long-standing well-wisher of Manovikas. We are grateful for his presence and the blessings he continually bestows upon us. Sir, please, Arvind Sade sir, and Muralidharan sir, please. सर जैसा ही Yes, sir. Manovikas has once again presented us as a token of our deepest gratitude and appreciation. Oh. Please, Tanya, would you come here? Now our request. Sade sir, to please request our guest and please. सबसे पहले नए वर्ष की शुभकामनाएं. इस नए वर्ष में नई शुभताएं हो, नई भावनाएं हो, शुभ संकल्पों के पल्लव निकले और हम सब का अंतिम छोर जो है वो शांति की और ईश्वर के चरणों में रहे. इन शब्दों के साथ आपको नववर्ष की सबको बहुत बहुत बधाई, मनोविकास को बहुत बहुत बधाई. और आलोक, हर साल आप मुझे बुलाते हैं और ये दायित्व देते हैं, इसके लिए आपका आभार. आज का जो टॉपिक है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन. सव्यसाचिन संबोधन है अर्जुन के. उसका अर्थ ये है कि जो दोनों हाथों से वर्णों को एक गति से
छोड़ सकता है वो ऐसा विश्वास। बाएं हाथ से भी वही एक्यूरेसी और दाहिने हाथ से वही एक्यूरेसी। गीता का ज्ञान लगभग 5000 वर्ष पहले हम सब जानते हैं दिया गया था। और जो गीता का ज्ञान दिया गया है वो किसको दिया गया है? अर्जुन को। अर्जुन क्षत्रिय है, यानी कर्म से संबंध है अर्जुन का। और कर्म की परंपरा ही एकमात्र कारण है इस देश की प्रगति का, जिसको सोने की चिड़िया कहते थे, ज्ञानियों का गुरु। कुछ भी ऐसा नहीं था तो इस देश में नहीं था, उसका एकमात्र कारण कर्म है। और अर्जुन युद्ध के क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र में धनुष बाण को छोटे खड़ा हो गया। उसको जगाने के लिए श्री कृष्ण ने देश दिया है गीता का। गीता सार्वभौम सब कुछ है, समाप्त। लेकिन कर्म मेन है, ऐसा बहुत आचार्यों का मत है। 5000 साल से पीछे के 3000 साल तक इस देश ने कभी कर्म को छोड़ा ही नहीं। उसके बाद धीरे 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 कर्म छूटता चला। बहुत लोग आए, महावीर, बुद्ध, उसके बाद में आदि शंकर, रामानुजाचार्य वगैरह वगैरह, बहुत महर्षिगण आए। सबने गीता पर व्याख्या लिखी, लेकिन जो एक अंश छूटता चला गया वो था कर्म का। और जो कर्म छूटा, उस कर्म की जगह संन्यास टपक गया। वो संन्यास था जो भगोड़ा संन्यास था, संसार से पलायन। ये सबसे बड़ी विडंबना इस देश की रही पिछले 3000 साल। और जहां तक मेरा अपना अनुभव है, इसको मैंने अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में भी अनुभव किया है। इस देश की मूल समस्या जो है वो आलस्य है। जो भी जाति, जो भी प्रांत कर्मठ है वो आगे बढ़ गया। आप देख लीजिए, अनुभव करिए। मैंने अपने जीवन में लगभग 35 साल के कॉर्पोरेट जीवन में जो सबसे बड़ी चुनौती ही मुझे मिली वो भी कर्म की। काम चोरों की जमात पैदा हो गई है। कारण क्या है? लोग गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए और गुरु बन गए। ये वो संन्यास था जो मूर्खता संन्यास था। कब्र में दोनों पैर रखते हुए सन्यासी बन गए। विवेकानंद ने गेरुआ वस्त्र पहना था। ये सनातन धर्म का आदर्श चिन्ह है, अद्भुत चिन्ह है। और पूरे देश में भ्रमण किया, कहीं भी गरिमा को नीचे नहीं होने दिया विवेकानंद जैसे लोगों ने। तो विडंबना यही है इस देश की, कर्म शिक्षा। गीता का सही उद्घोष जो पांचजन्य शंखनाद है वो कर्मण्य वाले कारस्ते ही है और कुछ नहीं है। आज का जो उपदेश गीता का है वो कर्म पे है। कर्म करो, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। फल के लिए एक और विधान बैठा है, वो अपने आप जो करना है कर देगा। और 11वें अध्याय में उसी को आगे बढ़ाया श्री कृष्ण ने। निमित्त मात्र भव सर्वसाचित। कर्म करना कैसे? निमित्त बन जा, यानी तू यंत्र मैं यंत्री। और इन विशाल परंपरा में एक नाम ऐसा भी है जो वेदांत की जो मूल तत्व है, मर्म है, उसको यथावत रखे हुए हैं। वो स्वामी पार्थसारथी। हम सबका सौभाग्य है स्वामी पार्थसारथी जी के शिष्य मुरलीधरन जी आज हमारे बीच हैं। और लगभग 20 मिनट का निमित्त मात्र भव सर्वसाची इस पर व्याख्यान होगा। उसके बाद में हमने करीब 5 से 7 मिनट का प्रश्न उत्तर का सेशन रखा है। अगर प्रश्न आएंगे तो उनका सही उत्तर देंगे। और इन्होंने, स्वामी जी ने लगभग 75 वर्ष, 97 वर्ष के, मुझे आज ही पता पड़ा स्वामी पार्थसारथी, लगभग 75 वर्ष उन्होंने वेद की साधना में, वेद के अध्ययन में दिया है। और उन्हीं के डायरेक्ट डिसाइपल हैं मुरलीधरन जी। अभी चेन्नई से दिल्ली शिफ्ट हुए हैं। और मैं सर आपको आमंत्रित करता हूं, आइए और हम सबको अपने ज्ञान से आलोकित करें। मुरलीधरन।
ये अंग्रेजी में रहेगा, तो कृपया हम सब अंग्रेजी कुछ न कुछ चीजें जानते हैं और समझ भी लेते हैं। हरि ओम। सर्वम कृष्णार्पणम। एक्चुअली माइक की आवाज कम। few days back, I think last week, maybe 2 weeks back, I think Mr. Lakshmi Narayan ji, that Arvind Sharda knows Lakshmi Narayan ji very well, and you may, maybe some of the people here also may know Lakshmi Narayan ji very well. He is also our senior most disciple of Swami Parthasarathy ji. Actually, Mr. Arvind ji actually asked Mr. Lakshmi Narayan ji to address this Nimitta Matram Bhava. But it happened that today I be the instrument here to deliver this talk. So he is out of station. So I am here to deliver this talk. So when Arvind Shardaji was telling me, so if you have any topic also, it's okay. Otherwise, you can talk on this Nimitta Matra Bhava. He said, I like it very much. Nimitta Matra Bhava. I think who can be Nimitta. See, when we say Nimitta Matram Bhava, Sabyasachi, all the great works can be done only when we consider it's all God's will and we consider ourselves as instrument. Nimitta Matram means instrument. Bhava means be. Just be yourself as Nimitta Matram. Sabyasachi. Sabyasachi, as Mr. Sadaji explained, the great archer, he can shoot arrow with both the hands, right and left, both the hands. So in such a, you can say, it could represent great performer in a way. So here, all these great performance have been done with the idea that we are performing God's will. Unless until if we consider ourselves it's done by God, then the ego steps up. So we have to consider ourselves as instrument. So here in this verse, it says, Krishna tells Arjuna, Tasma, he says, therefore you get up and fight, man, he says. The Bhagavad Gita, whole Bhagavad Gita, this chapter, particular chapter, 11th chapter, verse 33, we are talking now. Here Krishna tells Arjuna to fight. Get up and fight. Acquire, I'm just reading out the translation of the thing. Get up and fight, man. Get up and fight. Acquire fame. Having acquired fame, having conquered the enemies you see in the opponent team, having conquered them, enjoy the prosperous kingdom returns. And whatever you said just now, you are telling Arjuna, he is telling Arjuna, you are telling, I could see Bhishma, I could see Drona, I could see all my relatives, kids, king, and everyone in the opponent's army. I don't want to kill. So that is the argument. That is the argument is going on between Arjuna and Krishna. So now Arjuna is in a way gone to different state. He is telling Krishna, I don't want to fight because I see all my relatives, I see my guru, I see my Pitama, and I don't want to fight. I don't want to kill them. To that Krishna tells, they have already been slain by me. He says in this verse. Then he says, Nimitta Matram Bhava. So here Krishna trying to point out whatever is happening in this world. He is trying to tell us whatever is happening in this world, it is just done by me. It's my will, it's Lord's will. And we must understand that it's Lord's will
then what we must do? We must surrender our ego. So that's why I said that all these great works can be done only when we consider ourselves instrument. Instrument means not arrogating our achievements, not arrogating our performance to ourselves. See, I think Mr. Alok, I don't know, full name, sir, Alok Bhuvan. Alok Bhuvan is said, I am just performing my action, I am not expecting any result out of my action. Whatever this action which is happening through God's will, I am just doing it, just now we said, while giving the introductory speech. So similarly here, Krishna tells, consider that yourself as Nimittam. Nimittam means instrument. So be an instrument. It's all divinity's play. So it doesn't mean that we have to just simply leave it to God everything. Whatever we are supposed to do, whatever the nature we have got, we have to perform our obligatory duties. That is what it says. Get up and fight, he says. Krishna tells Arjuna, get up and fight. So there you must perform your obligatory duties. And how you perform, he says, Nimitta Matram. How you perform it, how your attitude should be, he says. Just surrender your whatever the outcome of the action, you surrender that to Lord, he says. So surrender your result, the result of action to God. That way we must function. If you see here also, the Krishna in the verse, he says, the very first thing is, get up and act, he says, arise and acquire fame. And what all you say that you see the enemy is there, I don't want to kill. That's the second thing he says. And third, he tells, acquire name, fame, and enjoy the prosperous kingdom. So, when you do good work, you will get what? Good thing. So that's why Krishna is reminding Arjuna, you are the person who wanted this kingdom earlier. Now you are telling, I don't want to fight. No, don't do that. If you do that action now, in chapter 3, verse number 23, there it says, Yatyada charati shrestha satta devo taro jana. He says, when you do this action now, you will neither attain heaven. Sir, you will set a bad example. When you set a bad example, those who the followers, they also do the same thing. So set a right example. What is the right example? Just follow your karyam karma karotya hai. Just perform your obligatory duties. The next thing he says, they all been slain by me. They all been slain. They all already been killed by me. So Krishna tells, I have already killed them. And next thing is you just be an instrument. So when Krishna says, when I already killed them, he tries to mean you that this whole world. The previous verse he talks about, I am the destroyer. I am the time engaged in world in destroying the world, he says. And this verse he says, whoever you see, they may be alive now, but they are already dead. It is their karma brought them to this situation. So everything is in this world is functioning on based on law of karma, cause and effect. So whatever the good actions you perform, whatever the actions, the good actions you perform, the good actions bring about good result, good environment. See, I have done something good. That is why I am here today. Because I see a lot of people here with a lot of institution they are sitting here without expecting anything in return. So here Krishna tells Arjuna, just understand it is their law of karma. You are not anyway killing them. It is law is functioning in such a way they are destined to die because they have performed unrighteous action. That is the reason they come to this situation. So why are you just renounce that thought and become an instrument and kill your enemies, he says.
So while killing your enemies, he says surrender. Whatever the outcome of the action, you surrender that goal. The result to God. He tells. You don't worry about what you get or what you don't get. If you don't function only, you will get no fame. You will not get fame in the present, and you will not get the prosperous kingdom in the future. So that is why, there is one, how I am talking about here of Nimitta Matram, surrendering. The Nimitta Matram, I am taking it as surrendering here. How we can say, Swami Ramakrishna Paramahamsa gives an example. The bird, the bird flying that sits on the mast of the ship. The pole, you all see the pole. And the ship, the bird comes and sits on that mast. It's unknowing to that ship is started, the ship started. It didn't realize the ship already started. The ship is moving on the waters. So after a while, so long it realized the ship started moving and swimming in the waters. So it started flying every side, all direction. It flew all direction. It could see only the water everywhere. Wherever it goes, east, west, north, south, any direction it goes, it found only water. It couldn't see land there. So it got tired. The bird, it flew every direction, but it got tired. So it decided, it thought that, there is no way we can find the water. At least I go and settle on the mast of the ship. It came and sat on that mast. It settled there. Ultimately, finally, what happened? The ship took board to the land. So similarly, what we have to do, when Krishna says instrument, he says surrender your ego, surrender your kartrutva bhavana, surrender your ego-centric desire, surrender your expectation, surrender your pride, everything, surrender all these things and function, understanding that this whole world is functioning based on law of karma, based on eternal law. So cover to खोल लिया. Based on law, if the whole world is functioning based on law of karma. So understand that law and renouncing your ego, kartrutva bhavana and egocentric desires. So the moment you understand, you will stop wherever the wavering, we are moving in all directions. We are also, what is happening? Like bird, we are also moving in all directions. We are trying to find happiness in all directions. Wherever, whatever we do, we try to find happiness. So we stop that. We stop that. So by understanding that, I have to go and sit on the mast. So we must realize that we have to take refuge in God. That is what Nimitta Matram here Krishna says. So Nimitta Matram means take refuge in God. Take refuge in God means understand yourself as an instrument and God is the performer, the great performer, supreme performer. So it's like bird sitting at the mast. So when I said give up your ego, give up your pride, it's like giving up, I'm not doing anything. Whatever it's done, I've been allocated this job. So no allegation feeling, no egoistic thoughts, no pride. The pride in the sense I am not doing anything. I have been destined to do this. I have been appointed by God to deliver a speech here instead of Lakshmi Narayan ji. And similarly, whatever I am doing, it's all God's will.
So that way, when you understand what happens, you drop your ego. You drop that I am the doer. The moment you drop the I am the doer, what happens? Your life goes smoothly. So like we must consider, see when we say dropping ego means we must consider ourselves as a spokes in the wheel. And up in the center holding together all the spokes. So we are all just spokes in the wheel of life. And we have been held by up in the center. So when you consider yourself like that, then what happens? You drop off your ego. Everybody has been given certain talent, that certain skills, certain nature. So according to the nature, according to the talent, according to the skill, they are performing their actions. There is nobody is a great or nobody is a less. What's his name? Vegan. He's just, expressing his happiness, I think, or whatever. Maybe just expressing his good emotions. He's just enjoying the place. So there is no ego, nothing, just simply, expressing his emotions. It's just enjoying. So this is what Nimitta Matra. So just surrender yourself to God and function whatever God has given. Like you people doing here. And the extension to this story, that the mask. There is one more thing I just want to add. See, when I say Nimitta Matram, it doesn't mean that we have to stop acting. Stop acting in the sense, anyway, God, whatever, it's not stop correcting ourselves. We have to correct ourselves. If we do mistakes, if we are lagging behind, then we have to correct ourselves and move up. But there is all possibility we can misunderstand and anyway God's will. If I'm like this, it is God's will. That is why I'm like this. It's not like that. So we have to proceed further. That is why Krishna is telling Arjuna to proceed further. Why are you getting stuck here in the battlefield, just before the battlefield? Proceed further. You are a Kshatriya, you have to fight in the battlefield. And similarly, we also have to proceed further. Nimitta Matram only, whatever we have to do for that, we have to consider ourselves as a spoke in the wheel. But we have to perform our actions. That we cannot leave it to God. God is a supreme supervisor. He will see whether you are acting well or not. If you act well, you will be flourished with all the good things. If you are not acting well, then you will be flourished. You will go down. So we must act. See one Swami, the Swami and a disciple. A disciple learned about this example. He learned about this Swami's example, and he goes and tells Swami, yes, I don't want to, now I don't want to fly here and there. I don't want to go bisect in all directions. I think I just let me settle down on the mast of a ship. Like that, I just settle down. For that, Swami is asking, when did you start flying, man? You are saying, I don't want to fly like a bird. Instead of flying, I just want to sit on the mast of a ship. For that, Swamiji asked that disciple, when did you start flying, man? You never started. So we must start. Start in the sense we must perform. We must act. But with the attitude of Nimitta Matram. Action can become good or best only when it is considered. I am not, only when I consider myself, I am not doing it. I am not doing in the sense, I mean myself. I am not thinking about myself while performing action, that I am doing this action for
the benevolence of these people. The moment you say, I am doing good for these people, then ego comes. The ego started playing. So leave that ego. Just consider you are being appointed here as an executive to perform this action. That's it. So that is what Krishna tells. You are an executive now. You have to perform this action to your best of your ability, to the best of your ability. So and we may ask one question that as a human being, we all have been provided with choices. Because we have been given intellect. See, there are three equipments. Every human being is considered how many? Consists of three equipments. I think you all may be knowing it or must be knowing it. Any idea? Anybody? Yeah? What are the three equipments we have provided with? All the human beings have been provided with three equipments. Any idea here? What are those? I think you are used to listen to Swamiji and Chinmayaji. Body, mind, intellect. So since we have been provided with intellect as a human being, we have also been given intellect. We have to make choices. We all have choices as well. So as a human being, we have choices. So we must exercise them. We must act on them. So we must perform our duty based on our choices. We must perform our duty well based on our choices. Then what we have to do? Leave the result to God. Then there is one more story I want to say. See, we all know that Krishna, Lord Krishna, lifted Govardhan hill. He protected Vrindavan, he lifted Govardhan hill and protected Vrindavan from lightning and thunder. So there was a heavy flood going on in the village. So Krishna then lifted Govardhan hill with his left hand little finger. Just effortlessly lifted. This is one part of the story. There is a variation to story. This story, we have variations to the stories. Actually, Krishna called for help. He called all the cowards, the village for help. So why you people also come and help me? We can lift the mountain up. You can bring your staffs and stick. Please support me with that sticks, that staff, so we can hold this mountain up. And everybody doing that work, and they lifted the mountain up and they kept the staff there. And slowly, these when they were all under the mountain, these cowards started feeling, I think, because of our help, Krishna, we all help Krishna because of our help. Now the mountain is being lifted up. The moment they thought, immediately what happened? Krishna slightly just, I think my finger is paining. I just let me relax. So just slightly relax, not very much, just slightly relax. Immediately they started feeling that the whole hill is coming down. They immediately started shouting, help, help, help. They crying for help. Please, Krishna, please save us. So then Krishna lifted the mountain. So they understood that it is not me, it is not the strength of me, it is not the strength of our staffs and sticks which is holding the mountain, it is Krishna's strength. So when Krishna says Nimitta Matram Brother, we have to surrender our ego to the Lord's will and we have to function. But since we have choices, we must use them very carefully.
But what happens, generally, the whole problem is that we think we do everything. It is done by me. It is done by me. I have done everything, so I deserve the better results. If the results are good, if results are good as expected, as it is supposed to be, we are very happy. When results are not so good, immediately we complain to God that, why I am getting like this. I have performed really well. I have done really great work, but you are not given me whatever the result which I expected. Why are you doing like this? We immediately complain to God. I supposed to get actually better result, but you are not giving me the good results. So that is why I said the Krishna example. See, whatever is happening in this world, it's God's will already said. So consider that thing fully and be aware of the laws which is governing this world. Once you are aware of the laws which is governing this world, then what happens? You become a speck, you become a small thing, tiny thing. The moment you consider you are a tiny thing, you become just an instrument. You will never arrogate whatever you achieve, whatever you perform, you will never arrogate that you are a person. So yes, Sabya is there. Nimitta Matram Baba, Sabya Sachin. I think 5 more minutes, it's okay, sir? I just finished that Sabya Sachin because it's a huge topic. I prepared so much, but I'm taking here and there and talking from it. Sabya Sachin, as Mr. Arvind Chadaji said earlier, Sabya Sachin means a great performer, I would say. The ambidextrous. The person who can shoot arrow with both the hands. So when we say Sabya Sachin, he is a great performer. That's what it represents, great performer. Arjuna is such a Sabya Sachin, great performer. What happened to him? He had succumbed to such an unmanliness. He says in chapter 2, verse number 3, he says, why you have succumbed to this unmanliness? Then he says, Kutaswa Kashmalamidam Vishame Samupastitam Anarya Vishkam Aswargyam Atirthi Karam Arjuna. Says, whence has this deception come upon you? Whence has this deception come upon you, Arjuna? Is unworthy of an Aryan. It will neither give heaven, nor it will give fame now. It will neither give heaven in the future, nor will it give fame in the present. He says, so such a performer now is succumb to this low level. So what is happening here? In a way, Arjuna is succumb to his weakness. In a way, his intellect is held hostage by his mind's weakness. So to perform your activity to the great level, we must develop our intellect. So I just finished with development of intellect. So later you can ask any questions if you have. So to develop our intellect, because we have to make choices. To make right choices, we have to have a right intellect, develop intellect. To develop our intellect, what we must do? We must do 2 things. Question everything. Never take anything for granted. Never accept anything for granted. When you do this way, what happens? You develop your intellect. And also, side by side, you also have to study. Understand the higher values which is governing this world. Also study Vedantic texts. Spiritual knowledge, spiritual knowledge. So based on your questioning and not accepting anything for granted, you will develop intellect slowly. So I finished it with one more example.
So when Krishna tells Nimittam, so when we see the word Nimittam, it is like you can compare Nimitta Matram to stone. And God's will we can say Guru, sculptor. A sculptor can make a good idol. He can carve a good idol, only stone surrenders to sculptor. When stone surrenders to the sculptor, the stone becomes the best idol coming out of sculptor. So similarly, we must surrender to Guru. Shishya, Guru Shishya, when I say Shishya, any student, whoever is approaching this world, this knowledge, they must surrender to Guru. Guru in a way represents Shastras and spiritual knowledge. So we must surrender ourselves to Guru. We must give away. We must give our subtle body to Sukshma Sharira, subtle body to Guru open-mindedly, without having any pre-conclusions, any pre-learned knowledge. All these things we have to set aside, and we must surrender to Guru in such a way. When when students surrenders to Guru in that thought pattern, open-mindedness, then such a good student is said to be adhikari. Such a guru, such a student becomes great performer later. So consider yourself as Nimitta Matram. Consider Guru or the teacher, Krishna, as your supreme will. So when you consider that way, so your life will flow freely, smoothly, and you will achieve all the great heights. And when you don't get the expected results, even you will not be disturbed. Then this disturbance, no disturbance can create further good thoughts in you. The good thoughts produce a good things outside. So I'll conclude my session here. If anybody has any questions, they can. No questions? Very thank you, sir. आज हमें उनसे किस तरह से निमित्त मात्र भव सर्व साक्षी के बारे में सुनने का मौका मिला और कैसे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के उदाहरण के साथ आज उन्होंने हमें इस बात से अवगत कराया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं अपने अवार्ड सेरेमनी के लिए। Let's give a big round of applause to our achievers who have demonstrated constant hard work throughout the year. Today we are presenting 10 annual awards that are chosen by our teachers, faculties, and panel of jury members. Each awardee will receive a cash prize of 1100 and a certificate of appreciations. Now, I invite Subi ma'am, please, for awards. Slides for you. The first award is Lal Advani Memorial Award for the best student. This award is the memory of the great eminent activists in the field of disability and rehabilitations. Lal Advani was the founder of the Blind Relief Association of Delhi. Next.
जूम पे शेयर कर रहे थे, जूम पे शेयर कर रहे थे। जूम को हटा दो, जूम हटाओ, कैसे करो? या नेक्स्ट नेक्स्ट। The nominees for this award is Shivanshu Singh and Himaksh Kaushik. Next. And the award goes to Shivanshu Singh. Tanya Monica. Shivanshu has been participating in nominations even after having intellectual disability. Shivanshu is not only punctual and hardworking, beyond his academic pursuing, he is actively participates in cultural activities and engaged in various art and craft projects. Shivanshu is not here, so behalf of Shivanshu, Ikra is a teacher of Shivanshu, so please accept the award. The clap for Shivanshu. हाँ, इकरा की मेहनत है शिवांशु के लिए पूरी तरह से। थैंक यू Thank you, ma'am. Now I request Anil Joshi sir for next award. My next award is Indira Mathur Memorial Award for the best resident in Manolia Residential Care. Manolia is our residential care, जहाँ हमारे people with intellectual or developmental disabilities वाले रहते हैं. So this award is presented for the best student in domestic skill. It is sponsored by late O.N. Mathur. So nominees for this award is Sambhav and Amit Rastogi. And the award goes to Sambhav Jain. Wow, great. That was Sambhav. Someone very helpful, caring, cooperative residents, and very enjoyable. Very excited. Very good. Chalo, award. Thank you, Joshi sir, for getting this award to Sambhav. थैंक यू आराम से So now I request Muralidharan sir for next award, please sir. Now next award is Arman Award for academic and functional skills. This award is sponsored by Captain Arjun Rana and Mrs. Anju Rana in the memory of his son Arman. Next. And the nominees for this award is Manas and Krishna Rajat. Next. And the award goes to Krishna Rajat. He is a regular attendant, teacher support, and helps in the developing communication and functional activities. So, Krishna is not here. On behalf of Krishna, Pooja ma'am is here. Pooja uski teacher hai. And the dedication towards Krishna हमेशा पूजा का रहता है. So this award is taken by the Pooja. So clap for Krishna. Thank you, sir. Thank you, please. Now I request Sanjay Vatramaji, sir, please, sir. नहीं Punit sir, please, sir. Next award के लिए. Next award is Shohan and Deonaran Award for the best student in vocational skill. This award is sponsored by the late Vaidya Pandit Kailash Mishra in the memory of his father, Shri Shohanand Mishra, and father-in-law. And the nominees for this award is Himanshu Kaya and Anisha Taneja. And the award goes to Himanshu Kaya. Himanshu was housekeeping, attendant course, and 3 years independent in traveling and money management. Now able to make Bandhan Bar independently in love art. He's on social media. He is also on social media, Facebook and Instagram. So congratulations, Himanshu. Thank you, Punit sir. Now I request Priya Gandhi ma'am for the next award. The next award is Natraj Award for the best students in cultural activities. Natraj Award for the best students in cultural activity, which is sponsored by
Mrs. Indira Alok, Principal of Manovikas School for Inclusion. And the nominees for this award is Apari and Raghav. And the winner is Apari. So Apari is not here. On behalf of Apari, Punja will collect the award. So please, ma'am. So congratulations, Apari. Clap for Apari, please. Next, I request Abdul Malik ji, Abdul Malik sir. Now, next award is Valentine Award for the most affectionate student. Valentine Award is facilitated on the recognition of the most affectionate student of Manovikas. This award is on the remembering occasion of the marriage anniversary of Alok and Indra ma'am. So, nominees for this award is Manas and Amreen. And the award goes to Manas. Manas is very clean, adorable, for everyone. Manas is loving smile and gesture. So Manas is not here. So Sushil sir, आप इसके award लीजिए. Graduate सुशील सर का मानस के साथ काम रहता है और स्पीच की बात करें तो सुशील सर के कारण मानस बहुत आगे बढ़ा है. तो congratulations मानस. Arvind Sade sir, please एक बार. Now next award is Dr. Rita Peshwariya Memorial Award. The recognition of students for the graduate with intellectual and developmental disabilities of Manovikas Institute for Higher Education. And the nominees for this award is Amulya and Tanya Bhatani. And the award goes to Tanya. Oh my God. Tanya is here. Now Tanya is working as an assistant teacher in Anand Child Center, which is the early intervention program of Manovikas. So congratulations, Tanya. Now I call Namrata ma'am. Dean Bandhu Award for the Training Excellence in Education. Manovikas Institute for Higher Education present this award in the memory of late Vaidhi Pandit Kailash Mishra Dean Bandhu. And the nominees for this award is Sayyam Jan and Miswa. Namrata ma'am will be बहुत dedicated teacher. And the award goes to Sayyam. Oh my God. That's what we wanted to do. So God bless you, Sayyam. बहुत अच्छे से God bless you. Thank you, Namrata ma'am. Sukya sir, please. Excellence in Creative Teaching and Working Award. Manovikas Institute for Higher Education established this award to recognize the teacher and employee of the gifted that contrasts creative learning environment in which students and teachers alike explore, imagine, engage in a variety of thought and working experiences. Next, and the nominees for this award is Ikra Khan and Pooja. And the award goes to Ikra. Very good. Ikra used innovative techniques in her research. She focused digital technology and advanced methods for the better and creative learning environment. Ikra, please. Thank you, sir. Desai, sir, please. Last, Desai, sir. You are yes, the word. Very special and parent award. very special parent. Very special parent award. Okay. This very special parent award is given to the mother and father who are a helping hand for their child. And the nominees for this, Mr. Kumar Singh and Mrs. Sunita and Mr. Ravi Kumar Vallapalli and Mrs. Vanu Venkat Bana. And the award goes to Mr. Kumar Singh and Mrs. Sunita. Please, ma'am.
अच्छा हाँ, मैम, ये क्या? तो क्या था मैम? हाँ निमित्त के साथ वेरी गुड really seems very dedicated to थैंक यू सर। आज हम सभी को बहुत अपार खुशी हो रही कि हमारे बीच बग्गा सर एमएलए ऑफ कृष्णा नगर पधार चुके हैं। तो फिर से मैं चाहती हूँ कि सर का स्वागत फूलों के गुलदस्ता से हम करें। सर थैंक यू सर। सर हमेशा मनोविकास के लिए ब्लेसिंग और डेवलमेंट रहते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर आज हमारे बीच आने के लिए। प्लीज वो सब तो बोल के जाइए जी मनोविकास एनजीओ द्वारा आयोजित अवार्ड सेरेमनी में सबका स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं कई बार इनके बच्चे ये पढ़ाते हैं, इतना ये पुण्य का कार्य कर रहे हैं। बच्चे बुलंदियों को छू रहे हैं, बिना गुरु के गति नहीं है। ये लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, वो आगे मुकाम पे पहुंचते हैं। हमेशा गुरुओं का सम्मान करें। कंठों में लिखा हुआ गुरु में गणों पड़े आपको लागू पाए बलिहारी बुरा प्रेमी तो जो होता है। नॉलेज इज पावर। नॉलेज मिलेगी आपको गुरुओं से। तो मैं प्रार्थना करता हूँ पेरेंट्स से बच्चों को जो भी सुविधाएं हैं एजुकेशन आदमी बीइंग एमएल ऑफ दिस एरिया रेडी हूँ। धन्यवाद। और हमारे बीच कुछ गेस्ट से हम ब्लेसिंग लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करती हूँ डॉक्टर जेपी सिंह सर का, जो फॉर्मर मेंबर रहे हैं आरसीआई के। तो सर प्लीज आपकी ब्लेसिंग हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। नौकरीदास को ब्लेसिंग की जरूरत ही नहीं है। अच्छा काम कर रहे हैं और आज आप लोगों ने सुना ही है। मोदी एक निमित्त मात्र मोदी जो इस कार्य को कर रहे हैं, जैसा उन्होंने बताया उनके पिताजी ने उनको दिया जो सीख दिया। और हम तो बहुत साल से देख रहे हैं जब से सेंटर खुला है, जब से लोग कर रहा है, हम काफी बदल गए। पहले थोड़ा गुस्सा और वो जो था वो खत्म हो गया, शांत हो गया और कार्य किए जा रहा है। हमारी तरफ से सभी शुभकामनाएं और विकास की। मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ केडी आउट सर का, जो फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पर्सन विद डिसेबिलिटी का। तो सर आपकी ब्लेसिंग्स भी मिलेंगे। Thank you. I should thank Manovikas for inviting me. It's been a very pleasure attending this function. And I'm really touched with Karkardooma, my friend. Good work is being done by this organization. And the way the students are performing, the children and the faculty, it shows that they're doing well. And it is a very tough job. And like a doctor, you'll be able to see the result if the patient has a cold or fever in the next 2-3 days. But here, this is a kind of field where we will never see improvement quickly. So therefore, a lot of patience is required. Sometimes there's no improvement even after so many years. So the faculty, the management staff, they're working very hard, and I hope that they continue this important work. And as today's topic, only be an instrument, I think Alok has proved to be survey champion of this organization, and he's working selflessly. And I'll give 1 or 2 examples where people work selflessly. One is mothers.
they don't expect anything what they're doing, and they do so well. They do without ego, without expecting any reward. That is one example where they are just an instrument to run the family. Another example is a soldier. He only listens to the commander. He has no ego. He has no any thought. He blindly follows the leader. The one example where the person is not an instrument is Duryodhana. He has not listened to Lord Krishna, and therefore you see what happened to him. He had a lot of ego, he had a lot of selfishness, and a lot of arrogance. So that is where we have the difference. We can see the difference between Arjuna, that he followed Krishna in a right path, and Duryodhana, where he did not follow Krishna, and we know what consequences he faced. So I think it's very clear that in any situation that we are, in a government or in a NGO, we can work very selflessly, without ego, without expecting results, not thinking about success and failure, just doing the work, just as a farmer does. Even though there is no rain, but every year he keeps on sowing the seeds, he knows that yes, the next year can be different. So I think with that mindset, one more example I'll give in a family where the father is the head of the family. If the children listen to the father, because father knows what is good for the family and where the family should go. And if every child listens to the father without any ego, without any kind of fights, then you will see that everything goes on smoothly. I think that is what Krishna says, that I run this world, just listen to me, follow my path, and I think everything will be all right. I think that is the message. I think it's very well given, and it is reflected in the work of Manovikas, and I wish all the best. Thank you, sir. Now, I like to call Gupta sir. So please, bless me, sir. सर के शब्दों के बिना तो हम लोगों को आगे बढ़ना बहुत कई बार हो जाता है. तो सर प्लीज. एक बात वही हो जाती है, मैं तो निवेदन मानता हूँ, जो कुछ करवाता है वो करवाता है. ये वो बहुत पुरानी बात है ना, लोगों ने कहा कि कोलंबस ने अमेरिका को घुसा. Was it true? Was America not there? It was there. वो वहीं था, रास्ता भी था, बस कोलंबस went on that way by the grace of God and found America. तो वो निमित्त मात्र बन गया. दूसरी अपनी हम लोग बहुत चीज फेमस बहुत ज्यादा आ रही है. मैं बहुत रिसेंट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा आ रहा है कि हमारा चंद्रयान 3 दरबार पर पहुंच गया, दक्षिणी भाग कर गया, उसने वहां से तस्वीर ली और हम प्रेज लिए जा रहे हैं. वहां पर भी हम निमित्त मात्र हैं, हमने एक कर्म किया, उसका हमको फल मिला. तो जो ये बात यहाँ पर कही गई कि अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमको फल नहीं मिलेगा. हमारे पास में हमारे सामने झुकन वो आ सकता है, थाली में बरस करके आ सकता है, जब तक उठा करके हम उसको मुंह में नहीं डालेंगे तो नहीं होगा. दूसरी बात जो कही गई ना, श्रेष्ठ चिन्ह, बहुत अच्छी बात है कि अर्जुन दोनों हाथों से सही निशाना लगा सकता था. तो उसको हमको सीखना क्या मिलता है कि हमको अपने दोनों हाथों से वो कर्म करने चाहिए जो किसी को फायदा पहुंचाए, किसी को नुकसान ना पहुंचाए, किसी के लिए अच्छे हो, किसी को उससे नुकसान ना हो. तो वो हम चीज कहते हैं. वहीं पर जो इसमें कहा गया था, कृष्ण जी कहते हैं, मार इन मारुओं को मार तो मैंने पहले भी दिया. तो जो श्री मुरलीधर ने कहा कि भाई हमको घमंड नहीं करना चाहिए, तो वो नहीं होना चाहिए. हम जो कर रहे हैं वो हमसे कोई करवा रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं. नंबर 1. नंबर दूसरा, उनके हृदय से दोनों हाथों से हमको शुभ कर्म करते रहना चाहिए. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. सर रुचि सर, हम लोग आपको भी सुनना चाहेंगे, प्लीज एक बार संक्षिप्त में आप भी. Thank you. Thanks,
साल की शुरुआत करना मनोविकास के साथ इस परिवार में ज्यादा अच्छा लगता है। मेरा संपर्क डॉक्टर आलोकी से मेरे ख्याल से 22 साल पहले से आया है और तब से मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, विकास में भी देखा है, उनके व्यक्तित्व में भी देखा है। और जैसे उन्होंने कहा कि अभी गृहस्थ आश्रम पूरा कर वो अभी वानप्रस्थ आश्रम की तरफ जा रहे हैं, वो भी एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि वो मैच्योरिटी का सिग्नल है कि जहां तक हम कर सके हमने कोशिशें अच्छी की है, जिसका नतीजा दिख रहा है। मेरा सौभाग्य था कि पहले कॉन्वोकेशन में भी था और उसके बाद में भी कई कॉन्वोकेशन में आने का सौभाग्य मुझे मिला। ऐसी ही तरक्की होती रहे, आपके हाथों या आप निमित्त मात्र हो, लेकिन जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चे हैं, मैं खुद अभिभावक हूँ, मेरी बेटी 30 साल की है और मैं जानता हूँ कि उसमें कितने कष्ट लेने पड़ते हैं, ना कि सिर्फ माँ बाप को। We have to work as a team of experts, of doctors, of special educators, of other specialists, and most important, the society. So let's all keep the inclusion mindset. Wherever we go, let's be the ambassador for our children. And Manovikas is there. And last thing I would like to say, over a period of years, Manovikas has taken the right direction to build a body of knowledge, a repository of knowledge to the website, which is available to all of us. Please read that. A lot of work needs to be done by all of us. Let's all contribute to that in our own way. Or happy birthday to you today. क्योंकि सारी चीजें बहुत ही अच्छी है, तो और सभी को गणेश साल की मुबारकबाद और शुभकामनाएं। हमारे 3-4 बच्चे रह गए हैं अवार्ड्स के लिए जो देर से ज्वाइन किए हैं, तो मैं चाहती हूँ उनको भी लेकर आए और उनके सर्टिफिकेट्स प्लीज। प्लीज मैम देवनु बोस क्लास फॉर देवनु बोस। Congratulations. Next. काव्यम जैन, आइए काव्यम, क्लैप फॉर काव्यम। Very small काव्यम। Congratulations काव्यम। तो नेहा सभा और शहनशाह आदिल, शहनशाह की एग्जामिनेशन देखिए आइए वेरी गुड ज्वाइन करिए। So congratulations आप लोगों को। थैंक यू सर। अपना नाम बोलने आप बोलने नहीं
थैंक यू। हमारे सभी पुराने मित्र हैं, मगर जो नए हैं वो मैं स्तुति करता हूँ। मैं भी मनोविकास से बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ, and I think this is almost the last bit of the blessings and all that. जी जी। मैम आप 9 साल से लॉ कन्वोकेशन है 2030 में पहला हुआ था। अच्छा। तो पहले से लेकिन 9 सारे 9 में 9 आए हैं आप। Actually, one of the problems of old age is that your memory goes on. Anyway, Sai Saab, my old friends, dignitaries here in the room, and Bache, and of course, my colleagues. Of सभी को, I mean, the blessings after the wonderful things that we heard today. उसके बाद तो बहुत एक छोटा सा portion है very good wishes or blessings. Now I'm at that age to give blessings. तो वो तो मनोविकास के साथ है ही, मगर one thing is I would like to see Manovikas grow. It has grown, but the rate of growth has been not as fast as I would have expected somebody like Alok to, he's so dynamic, he's so full of energy, and he's the kind I want to see Manovikas grow and become a globally recognized entity in this field of disability. उसके लिए हम सबको मिलकर के उसको प्रोत्साहन देना है, मदद देना है, जो कुछ हम लोग कर सकते हैं। Because मेरा एक्सपीरियंस ये है कि नॉर्थ इंडिया में ऑर्गेनाइजेशंस बहुत कम है, there is a huge gap, and the number of people, तो खैर हम ज़्यादातर तो population concentration इंडिया का तो नॉर्थ ही में है, so if we can help Manovikas grow, we can help so many children grow. So I know you will have to chart out a roadmap. अब तो 1+ आश्रम की तरफ जा रहे हैं ना, तो you will sign of maturity as somebody said. So frame up plan of action, a road path. Dowji is also free, and believe me, he is one of the best people I've ever come across. So, and then you have Gupta ji, you have JP Singh's expertise, you have everybody is here for it. Whatever help you need, but you have to take the lead, get everybody together on one platform or one table, and let us chart this out. अगले 10 साल में, अगले 5 साल में, where do we want to go? जब तक एक रास्ता नहीं मालूम है, जब तक एक रोडमैप सामने नहीं होती, तब तक वो होता नहीं। जब तक वो plan A, plan B, and maybe plan C, but not more than that. Then, with all my best wishes, Happy New Year to everybody. Thank you so much, Alok, for inviting me, and it's a great pleasure being here. Thank you so much. Thank you, ma'am. पुलिस हमारे बीच में है, जो हमारे मेंबर बोर्ड मेंबर है मानुष, उनके फादर भी है, और बहुत साल से सर हमारे साथ एसोसिएट हैं। सर कुछ कहना चाहते हैं? Thank you, ma'am. What's it, Manu? Manu? He is associated with Manovikas since 2005. So 19 long years. And in fact, this is the family to which Manu belongs, rather than a family free. He is totally committed. And Alok sir के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकता। Give us. Sir, I want to. We just saw the award ceremony where in each category there were 2 nominations and 1 was the winner. To push the morale of the second one, who might have missed the award by a whisker, I wish to announce
₹500 award each to each second person. On behalf of Dr. Morgan, 500 रुपए के हिसाब से एक्सेप्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Number two, Manus told me that it's your birthday, happy birthday to you, sir, and he has got something for you. आओ मनुष। Manu, इनकी ना मनु की दादी माने मेरी माँ, वो छोटी छोटी ना कविताएं लिखती है। कविता क्या मतलब, मैं ये नहीं कहूँगा वो कवि है, लेकिन वो थोड़ा बहुत खाली में लिखती रहती है। मेरे पास दो कविता पहले से जमा है। तो एक वो उन्होंने लिखी ना, आज आप ही ने लिखवाई है। Yes. Thank you. Number 2 certificate. Thank you. Thank you. Thank you. मैं पढ़ लेता हूँ। अच्छा होगा कि तो थैंक यू वेरी मच। यस, और ये शादी माँ के हाथ से तो मैं भी ये तीसरा है, और वो भी प्रमाण पत्र में बहुत दूर बातें लिखी हुई मतलब जो है, और ये भी बहुत ही अच्छा हो। ओम आदरणीय आलोक सर, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम खुश हैं आज बहुत आपका जन्मदिन जो आया है, आपने ही आगे बढ़ने का हमारा मार्ग प्रशस्त किया है। माता पिता के बाद गुरु ही चलना सिखाते हैं, मंजिल पर पहुंचने का मार्ग आपके मार्गदर्शन में वो पाते हैं। जैसे माता पिता की वाणी सुन मन पुलकित हो जाता है, वैसे ही गुरु का आशीष भी प्रेरणादायक बन जाता है। माता पिता के बाद गुरु ही आगे का पथ दिखलाते हैं, किसी पथ पर आगे बढ़ना है वह राह हमें बतलाते हैं। बहुत ही अच्छा सुगंधी है। हम आपने अपने आदेशानुसार आगे को बढ़ते जाते हैं, और कठिन मार्गों पर भी हम आगे पैर बढ़ाते हैं। मैं धन्य हुआ आपको पाकर, आपने ही सन्मार्ग दिखाया है, आपके आदर्शों पर चलकर मैंने ही पथ पाया है। हार्दिक शुभकामनाएं, मनुज जैन। थैंक यू, थैंक यू। कल अभी सोशल मीडिया पे आ जाएगा, और मनुज का पूरा सोशल मीडिया इतना अच्छा है, इसका काफी अच्छा लोग भी फॉलो करते हैं। थैंक यू। Then I would like to now, we have so many members. हमारी मैडम है, निर्मल भंडारी मैडम है, then नम्रता मैडम है। So all the board members are here, मतलब mostly are here. Manoj is also there. तो हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। समय की मर्यादा को देखते हुए मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए विजय भाटिया जी को बुलाऊंगा। विजय भाटिया जी के साथ अगर देखा जाए तो हम लोग मनोविकास का पहला या दूसरा या तीसरा दिन वो शुरुआत हुई थी, और हम लोग बेसमेंट में मिले थे और वहां से आगे बढ़े हैं। तो विजय भाटिया जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बाबा जी धर्मलीन हमारे वैदिक पंडित जवाहर मिश्रा जी को ये शक्ल नमन देता हूँ, जिनकी प्रेरणा से ये परिवार बना हुआ है, और इतनी का लगाया हुआ है तो आज प्रत्यक्ष के रूप में देखता हूँ। मन बड़ा प्रफुल्लित होता है जब देखता हूँ बहुत गुणीजन यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरा विषय ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ ऊर्जा का विषय है, तो ये परमात्मा ही जुड़ता है। जैसे आपने निमित्त मात्र बताया, ये परमात्मा जो सबसे बड़ा ऊर्जावान है, जो पुंज है ऊर्जा का, जिसके हम सब अंश हैं, उसी की प्रेरणा से ये सारी ऊर्जा इकट्ठी होती हैं। हम अलग अलग देते हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, हमारे पंडित हैं, हमारे डॉक्टर आलोक हैं, हमारे डॉक्टर JP सिंह जी हैं, इनके साथ एडिशन में बहुत पहले 25-30 साल पहले इनका शिवराल से काम किया था। तो आप सबका हृदय से धन्यवाद। इस परिवार से जुड़े रहें, ऊर्जावान रहें, और इस परिवार की ऊर्जा को बढ़ाते रहें। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आपको धन्यवाद। Thank you, sir.
Now we request all of you to please arrange the national anthem, please. इसमें चला Please come. Come. कोई नहीं यहाँ ही दे दो, एक माइक दे दो, 1 मिनट Ma'am, आप आ जाइए please. नहीं भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे सब शुभ आशीष मांगे गाड़ी सब जय गाता भाग्य विधाता Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. We will have the high tea in. Yeah, मैं सब